Hello everyone. I hope you guys are doing absolutely fine. So today we are gonna revise time of supply, which is a very short summary. I have only 2.5 pages, and that too in landscape. We only have chart. In actuality, we'll get a very long. हमें ऐसा देखने को मिलता है कि we get a very long book, but in this chart, in this 2.5 pages, everything will be summarized. So bear with it. I'll try my best to use very simple English. So first we'll go with time of supply of goods. Here we are not going to revise definition. For that, please refer module itself or your concerned teacher's textbook itself. Your ICI site, you will get the module. Here we'll directly understand the logics and the chart. So first of all, we'll start with time of supply of goods. So which here we'll categorize into two items. First is in which the supply is under FCM, which is forward charge mechanism, or the second one is RCM or reverse charge mechanism. Here afterwards I will use the words as FCM and RCM itself as a shortcut. So for FCM, the time of supply is earlier of. So usually this symbol which I use can be stated as earlier of, but whenever you write in exams, you write like this. I have written it later on. So earlier of, like this. So use this language in exams. So for goods, if it is under FCM, then the time of supply is date of invoice or last date of issuing invoice, whichever is earlier. So the question might come, which is the last date of issuing invoice? So the last date of issuing invoice are different for different items, but it's logical itself. So if the goods involve or the supply of goods involve movement of goods, जैसे कि आपने कुछ मंगवाया via फ्लिपकार्ट और समथिंग लाइक दैट, आपने फ़ोन करके बोला कि सेंड मी सम आइटम्स डायरेक्टली टू मे बी यू आर गोइंग ऑन अ ट्रिप एंड you want a riding jacket. So you went on to rhinox.com and you ordered there. So whenever they'll remove the jacket from their workshop, suppose they removed on 1st January, ताकि आप शायद maybe not third, let's making more auspicious. So imagine this Rhinox guys, they removed the stuff from their warehouse on say 15th December, and your trip was on 1st January. So it reached to you on 30th December. So whenever they remove, that will be considered as their time of supply, not the date of receipt. Okay, so technicality is that whenever there is time of supply of goods, the supplier needs to, or in case of FCM, supplier needs to send that GST amount on that items directly to the government. And that is why here in movement, the direct removal of goods, वो बोलते हैं कि गवर्नमेंट बोलता है कि अगर आपके वेयर हाउस से सामान निकल चुका है तो आप मान लीजिए कि दैट वाज द लास्ट डेट ऑफ इशूइंग इनवॉइस. आई मीन देयर इज नो पॉइंट ऑफ कंसर्न राइट नाउ. Practically whenever you book itself after paying, that is the day of invoice itself. Or if you do something like COD, then उनको पहले ही पे करना पड़ता है. I mean, I know it might sound something unusual, but it is what it is. So whenever there is movement of goods and removal of goods for the supply to recipient, so that day will be considered as last day of issuing invoice, and whenever is your actual date of invoice, whichever is earlier, that will be your time of supply.
in reality the actual date wherein 1st January 26 में बोले तो ये actual date फर्क नहीं पड़ता, only month and year are necessary क्योंकि it's month wise in practicality that we do in business. And coming back here, if your product requires non movement wherein कभी कभार क्या होता है कि आप मानिए कि यू सेल वेयर हाउस का पूरा सामान ही बेच दिया आपने, वेर इन योर वेयर हाउस वॉज रेंटेड, द न्यू गाय ऑल्सो रेंट्स द सेम वेयर हाउस, तो इट इन्वॉल्व नॉन मूवमेंट ऑफ गुड्स. सो वेन एवर इट इज़ एक्चुअल डिलीवरी डेट, आपको सब शायद सामान निकले ना निकले, बट वेन एवर यू टुक द डिलीवरी दैट विल बी कंसिडर्ड एज लास्ट डे ऑफ इशूइंग इनवॉइस. इफ you have continuous supply, for example आप मानिए कि you have gas pipeline, not an actual gas cylinder but a gas pipeline जो आपके घर पे आता है, what you get in your home. So that is not, that gas is good, not a services. That's why I told gas pipeline. So its time of supply would be before or at the time of, I mean इससे पहले भी हो सकता है, but before or at the time of each statement. आपका mostly you will get quarterly statement in some of states and monthly statement in some of the states for gas pipeline, but that is another example. That was a specific example. This is the general stuff. So before or at the time of each statement or receipt of payment, whenever you'll do the payment to the supplier and they'll get the payment, that payment date or that statement date, whichever is earlier, that will be the last day of issuing invoice. And then if you send goods on approval basis, then iska to bahut easy hai. At the time of supply, that is whenever the goods or the buyer give assent that they are gonna take the goods, or 6 months from the lapse of removal. जब से आपके वेयरहाउस से निकल के उसके रेसिपिएंट के वेयरहाउस से गया, whenever 6 months lapse from that day, automatically it will be considered as a supply, and that will be the last day of issuing invoice, and then that would trigger time of supply, and then your GST would be due. Coming here to RCM, the time of supply is rather easier. Directly it's receipt of goods or date of payment or 31st day or after lapse of 30 days. So usually people use this term 31st day in module or in legal language. It is after 30 days. You can use either of the language from the day of issue of invoice by the supplier. Okay, that is the thing over here. And you might be concerned that date of payment comes here, but date of payment does not come here. Initially there was a date of payment, but right now we have some stuff like there was if I am spelling correctly, there was notification dated 66/27, which stated that date of payment was no longer applicable for goods under FCM, but there are some exceptions as well. So if you are under composition scheme or if you are under actionable claims, for example horse riding race or lottery, gambling or something like that, that comes under actionable claim. For supplier of these items, the third point, date of receipt of payment, is still applicable. And then in case आप मानिए कि some guys or some recipient might do late payment or some kind of different mode of payment, जैसे आप कुछ मंगाते हो, if you do some kind of COD, then that causes some COD fees. Okay, so whenever the fees that comes under, it's a type of penalty that आपने अभी COD लिया, it's wrong stuff, but most of the sites they use it. जैसे recently I bought this Portronics mic, उसमें भी COD का I had to pay some amount, an X amount. It was around 20, I think it was around 50 to 25 rupees. That was COD fees. I mean, we have to do that when I bought it directly from Portronics, so it was first time, so you cannot trust it. So I was like, चलो 25-50 ज़्यादा दे देते हैं, but
I hope to get a good product. So that we do. So uske liye it's a kind of penalty or late fees or interest. अब मानिए कि someone does late payment, तो उसका late fees या फिर someone payment देने के time में late हो जाए तो contract में लिखा रहता है कि 18% per month और per annum के हिसाब से ये they will charge interest. So what if this interest penalty and late fees are interlinked with the product? For example, आप मान के चलिए कि वो जो 25 रुपये जो मेरा ऐड हुआ था in my COD fees, actually that actually fits in this example, that's why I'm gonna tell you. So the time of supply would be date of actual receipt of payment, and there is a very good reason for it. I don't know why, but whenever the delivery guy came, it was totally on due amount itself. उसमें ये जो 25 rupees था added ही नहीं था. So I did not pay this COD fees. That's why it is not the day of accrual or day of invoice or including in invoice, क्योंकि मेरा invoice में add हो गया था, but I did not receive it. I mean, I did not get that whole invoice, but instead I got the invoice only of that goods, and thank you Portronics to do that. And luckily ये एग्जाम्पल में फिट हो रहा है, तो दैट विल बी द डे ऑफ एक्चुअल पेमेंट. क्योंकि कभी कभार आप देखते हो कि जैसे कोई भी सप्लायर ऐसे लेट फीस या फिर इंटरेस्ट ये लोग वेव ऑफ कर देते, पेनल्टी भी वेव ऑफ कर देते फॉर गुड फेथ, टू मेंटेन गुड रिलेशनशिप फॉर फ्यूचर ऐसी चीज़ों की वजह से सप्लायर दे डू द वेव ऑफ एज वेल. तो इसीलिए it's not kept as accrual basis, it is on actual receipt basis. आपको लगता नहीं in a hypothetical situation if everything was just receipt, it would be very easier. But it is not as easier, na? So coming here, we are done with goods, and I'll revise it very easily again. So for FCM concept, the time of supply was date of actual invoice, whenever the invoice was actually made, or the last day of issuing invoice, whichever is earlier. For the movement was removal of goods, for non-movement was delivery of goods, for continuous was before or at the time of or earlier of each statement or receipt of payment. For goods in an approval basis or was at the time whenever the buyer gave the assent, or 6 months from the date of removal. Okay, removal, not the receipt, removal of goods from supplier's base, whichever is earlier. That will be for FCM. For RCM, it's simple, receipt of goods or date of payment, or 31st day from the date of day of invoice of supplier. I did not discuss about it, but RCM में recipient is liable to pay GST to the government. So that's why आप देखोगे तो इट इज़ मेड इन सच अ वे कि आपको जब भी गुड्स मिल गया या फिर जब भी आपने पे कर दिया या फिर 31st डे फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर, इसीलिए 31 डेज देते हैं कि आपका सामान आते आते टाइम आपको क्लैरिटी मिल जाए. क्योंकि रूल इज़ नॉट मेड टुडे, इट इज़ मेड वेरी लीनियंट, एंड इट्स अ गुड पार्ट कि इट इज़ फ्रॉम रेसिपिएंट बेसिस कि जब भी आपको गुड्स आया या फिर जब भी रेसिपिएंट ने पेमेंट किया या फिर 31st डे फ्रॉम डे ऑफ इनवॉइसिंग बाय द सप्लायर. क्योंकि आप जब भी बुक करते हो मोस्टली सप्लायर इनवॉइस पे ही कर देते हैं. एंड 31 डेज इज एब्सोल्यूट कमेंडेबल कंफर्टेबल टाइमिंग कि आप इंडियन पोस्ट का एकदम स्लो पोस्ट, आई मीन स्पीड पोस्ट नहीं करके नॉर्मल जनरल पोस्ट भी करो रजिस्टर, तो उसमें भी आते आते 31, आई डोंट थिंक सो 31 डेज या फिर 1 मंथ से ज़्यादा कुछ लगता है. सो दिस इज़ द कंफर्टेबल टाइमिंग जब रेसिपिएंट पे कर पाए. आई रिपीट इट अगेन. फॉर टाइम ऑफ सप्लाई for supply of goods in the RCM is receipt of goods, date of payment, or 31st day from day of invoice made by supplier, whichever is earlier. So this was goods. Now coming here to services. So services का भी same है, FCM, RCM same. FCM is this GST is paid by supplier and this is paid by recipient in same case. So ये बनता भी उसी हिसाब से है. From this is from supplier's point of view, this is from recipient's point of view. So for FCM, supply of services, if the invoice is issued within time limit, अगर आपने देखा, so the last part was last day of issuing invoice
and here it is different stuff. I mean it's similar but it's different. उसमें directly लग दिया था कि last day of issuing invoice, उसमें सोचा भी नहीं था कि आपको पता चलेगा क्यों ऐसी बातें हुई है. We'll talk about it. It will be very comedical stuff. If the invoice is issued within time limit, then it will be earlier of issue of invoice or date of receipt of payment, whichever is earlier. Yeah, this is the language you have to use in exams, and you can use this ऐसे फ्लो चार्ट मत बनाइए, ऐसे पैराग्राफ में ऐसे पॉइंटर्स करके लिखिए कि if the invoice is issued within time limits, then the time of supply shall be earlier of date of issue of invoice or date of receipt of payment, whichever is earlier. Again चीज़ें बात और या else पे आते हैं, पहले टाइम लिमिट हम डिस्कस कर लेंगे, it's easier. Or else if the invoice is issued after the time limit, then it's day of provision of services of date of receipt of payment, whichever is earlier. So कभी कभार क्या रहता है, हम आपको समझेगा ये provision of services क्या है. ये जो time limit दिया है, it is always after provision of services या फिर on the day of provision of services. Mostly it's after as well. तो आपको ये जो दिन मिलते हैं ना for time limit for issuing invoice, you won't even get that. It is directly from the day of services. So it is kind of reciprocatory, I mean retrospective स्टफ के अगर आपने टाइम पे इन्वॉइस इशू नहीं किया फ्रॉम सप्लायर पॉइंट ऑफ व्यू, देन जब भी आपने दिया उसी दिन आपको टाइम लिमिट नहीं मिलेगा. एंड नाउ वी कम टू टाइम लिमिट. द टाइम लिमिट आपको क्यों है आपको समझेगा यहाँ पे. सो द टाइम लिमिट, we have two kinds of supply services का, continuous supply and non-continuous supply and continuous supply. Continuous supply means आप continuously किसी को आप services का supply देते हो, that is continuous, and if you give one time, that's non-continuous. So normally it's within 30 days of provision of services, and for bank, insurance or NBFC company or for finance companies it's 60 days for the of provision of services. It's directly double. सो आपने देखा यहाँ पे कि 30 दिन 60 दिन फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ सर्विस दिया है. सो अगर आप टाइम लिमिट पे देते हो तो इट विल बी डे ऑफ इनवॉइस, एंड मोस्टली पेमेंट आपको पता ही है इन इंडिया देर इज़ वेरी फ्यू. इन फैक्ट आई एम इन बिजनेस माई सेल्फ. सो यू पुट द इनवॉइस, देन यू विल डू एक दो बार ही आपको फ़ोन करना पड़ेगा बाद में, फिर दे लाइक तो देर इज़ वेरी फ्यू commendable clients who does the payment before the invoicing. So mostly it's after the invoicing. So from supplier's point of view, if you do not do the invoicing within time limit, then it is directly on the provision of services that will be taken as a date or receipt of payment, whichever is earlier. So आप भूल जाइए, mostly practically फिर यही होगा आपका date. Supplier must pay GST on this month itself whenever. So from RCM, so again this is from a recipient point of view. Okay, we missed here non-continuous supply. So coming here to the time limit of invoicing for continuous supply, the due date of payment is ascertainable and due date of payment is not ascertainable, and payment is linked with completion of an event. So ऐसा कोई मंथली मानिए you have taken or you have taken some kind of services from a supplier which is in continual basis. आप मानिए आपने मेड सर्विसेज लगा लिया हर मंथ from an app. I don't know, I'm forgetting the app, I do not use that, but आपने मान के चलिए कि आपने ईयरली का लगा लिया है, तो फर्स्ट ऑफ द मंथ या फिर वीकली जैसा भी होता है पेमेंट वैसा होता है. तो आप मानिए कि उसका ड्यू डेट सर्टेनेबल वो फर्स्ट मंथ को ड्यू हो जाता है, तो दैट इट्स ड्यू डेट और इट्स टाइम लिमिट ऑफ इनवॉइसिंग would be on or before due date of payment. घूम फिर के वही आ जाता है कि ड्यू डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट इज रिसीट, बट इट इज़
due date of payment. So due date of payment is ascertainable, then that will be on or before due date of payment. If it is not ascertainable, then on or before receipt of payment. So घूम फिर के, yeah, this is what I was saying, the date of receipt of payment ही हो जाएगा आपका time of supply. But if it is linked with completion of an event, then on or before completion of that event. अब मान के चलिए कि आपका फिजियोथेरेपी का आपने कोर्स लगवाया है. I mean, it is not happening in reality, but अब मान के चलिए कि आपका फिजियोथेरेपिस्ट ने बोला है कि आप पेमेंट तभी करिए जब आपका ठीक हो जाए. तो अब आपका एक डेडलाइन था, मानिए कि वो बोले इफ़ द डॉक्टर्स आर और द फिजियोथेरेपिस्ट इज सर्टेन, देन वो ऐसा करते भी है कि एक हफ्ते में अगर ठीक हो जाए तो दे आर लाइक कि ठीक है, पहले आप ठीक हो जाइए फिर आप पेमेंट कर देना. क्योंकि देन वो फिजियोथेरेपिस्ट का जो वो जो वेलनेस सेंटर होता है वहीं पे रखते हैं. तो मान के चलिए कि आप ठीक हो गए तो आपका ड्यू डेट ऑफ फिर फॉर फ्रॉम सप्लायर्स पॉइंट ऑफ व्यू उसका ड्यू डेट कब होगा, ऑन और बिफोर कंप्लीशन ऑफ इवेंट इटसेल्फ. सो फिजियोथेरेपिस्ट को ऐसे नहीं बोलेंगे कि अरे आपको क्लाइंट मिल गया तो आप सीधे ही उसको ड्यू डेट कर दो. आई मीन अभी ही आप उसको इन्वॉइसिंग करवाना की ज़रूरत नहीं है. वो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इवेंट दे कैन डू दैट. एंड इफ़ यू आर अ वेरी गुड क्लाइंट, अगर आपको बहुत अच्छे क्लाइंट हो तो यू कैन डू द अर्ली पेमेंट एंड दैट विल बी यू नो टाइम ऑफ सप्लाई, बिकॉज द टाइम ऑफ सप्लाईज इज अर्लियर ऑफ डेट ऑफ इश्यू ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट. एंड अगर आप मान के चलिए कि फिजियोथेरेपिस्ट ने आपको ठीक होने के बाद भी आपको इनवॉइस इशू नहीं किया, उसके एक हफ्ते बाद भी किया, एक हफ्ते बाद किया, तो फिर दैट इज़ बियॉन्ड द टाइम लिमिट, देन ये एप्लीकेबल नहीं हो कि वो यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे. एंड देन द टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डायरेक्टली प्रोविजन ऑफ सर्विसेज और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर. एंड सिंस आपने थोड़ा पार्ट पेमेंट पहले ही करके रखा था विच इज़ above 1000 रुपीज़ एडवांस पेमेंट से इससे ज़्यादा आपने करा होगा तो फिर उसी दिन को जिसमें आपने एडवांस पेमेंट करा था दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ डेट ऑफ सप्लाई. एंड देन उनको उसी मंथ में GST पेमेंट करना पड़ेगा. एंड इफ़ दिस इज़ एक्सीडेड बाय दैट मंथ, देन हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे भी कि उस पर इंटरेस्ट एप्लीकेबल होता है, बट दैट इज़ नॉट एप्लीकेबल फ्रॉम इंटरमीडिएट पॉइंट ऑफ व्यू, आई थिंक. So that is a practical thing. I'm trying to make this summary as lovely, as iterative, and as simple as possible. I hope you like it. If you do like it, do subscribe and do like, do comment, and we're coming back to RCM. This is made from the point of view of a recipient, and then ये बहुत amazing है कि this is made into different kind of stuff. जैसे हमने RCM में इधर कोई टाइप ही नहीं था, डायरेक्टली था रिसीट पेमेंट एंड 31st डे फ्रॉम इनवॉइस. but here it is कि it's non-associated enterprises for RCM. If it's unrelated party or related party, or mostly it's a non-associated enterprise and associated enterprise. Definition कोई अलग नहीं है, same जो आप पढ़ते हो it's the same definition कि related party, unrelated party. So if it's a non-associated enterprises or it's an unrelated party, then that is date of payment or 61st day from the date of issue of invoice. 61 days. इधर आपने देखा होगा we get only 31 days, but here we'll get if for provision of services we get extra 30 days, 61st day. In law or in CGST Act it's written after completion of or on the lapse of 60 days 30. Okay, it's the lapse of the 60 days, and generally we use this term 61st day from the date of issue of invoice from supplier. And the third thing is added by rule 47A, time limit to issue invoice. I mean third is added, but इसका जो time limit है 47 rule 47A से आता है. थर्ड वन इज डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द रेसिपिएंट, क्योंकि कभी कभार क्या रहता है इफ़ द सप्लायर इज़ अनरजिस्टर्ड पर्सन देन वो फिर इनवॉइस इशू ही नहीं करेगा. तो फिर दैट इज़ डायरेक्टली ऑन द डेट ऑफ पेमेंट एंड दैट इज़ नॉट राइट फ्रॉम सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि सर्विसेज ये छिप सकता है. तो इसीलिए गवर्नमेंट मेड अ स्टफ कि whenever you even the recipient has to make an invoice, and whenever they make the invoice then that will be considered as well.
So you have a time limit under 47A. If you are a recipient of RCM services, then the time limit to issue invoice for recipient is within 30 days from receipt of services or goods or both. So this is not only applicable to services but to goods and both. But time of supply में बस services में आता है, not in goods, if you have noticed correctly. So for non-associated enterprise, the time of supply shall be earlier of date of payment, 61st day of date of invoice or date of invoice, or not एक भी दिन extra नहीं, directly on the day of invoice, issue of invoice by the recipient itself. And if you are an associated enterprises, अब आप related party हो, that's some kind of deemed distinct person itself. I hope आप समझ रहे हो, subsidiary and all. एंड अगर आप दूसरे ब्रांच में भेज रहे हो, एक ब्रांच से जो आप मानिए अहमदाबाद में, दूसरे ब्रांच जो पुणे में है इसमें भेजते हो चीज़ें बिना पैसों के, तो इट्स कॉल्ड एट डीम डिस्टिंक्ट पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन ये होता है. तो उसके लिए यूल टेक इधर डेट ऑफ पेमेंट. यूजुअली ये होता नहीं है. अगर डिस्टिंक्ट पर्सन में, आई मीन सब्सिडियरी एंड होल्डिंग में हो सकता है, पेरेंट एंड वो कंपनी में हो सकता है, बट मोस्टली इफ इट इज इन अंडर डीम डिस्टिंक्ट पर्सन देन उसमें पेमेंट इन्वॉल्व नहीं होता है. बट स्टिल यू हैव डेट ऑफ पेमेंट एंड सेकेंड इज डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. क्योंकि दोनों का बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है, तो यू हैव नॉट स्पेसिफाइड हुज बुक्स ऑफ अकाउंट, किसी में भी हो जाए तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज द डे, एंड ऑन दैट डे itself it will be considered as time of supply, and then your GST shall be due, and on that day itself recipient shall be liable to pay the GST. एडवांस पेमेंट अप टू ₹1000. सो हमने इधर बात किया था ना 1000 का, कि आप एक फिजियोथेरेपी लेने गए थे एंड आपने शुरुआत में ही एडवांस पेमेंट किया. आप मान के चलिए आपने ₹1000 से कम का एडवांस पेमेंट करा है. मान के चलिए कि आपने फॉर्म भरा, आपने उसमें बस ₹500 का इन्वॉइस क्या बोलते एडवांस पेमेंट करा. तब तो इन्वॉइस का टाइम भी नहीं था. इन्वॉइस का टाइम क्या था हमारा, 30 डे फ्रॉम प्रोविजन ऑफ इन्वॉइसिंग, फ्रॉम प्रोविजन ऑफ सर्विसेज. तो आप क्या वो फिजियोथेरेपिस्ट वाले क्या सोचेंगे कि हमें 500 का एडवांस मिल गया, हम उसी दिन हमारा अक्रू हो जाएगा क्या? तो दैट इज़ नॉट द केस, क्योंकि क्योंकि उनको पेमेंट तो मिल गया है 500 ही सही. So here a government has understood it. So first option is usually normal time of supply provision. These all are time of supply provisions. यही apply हो जाएगा. But they have given second option to supplier, if your payment is up to 1000 itself, कि consider the date of invoice of such supply against which the advance was received. आपने suppose वो फिजियोथेरेपी का ₹500 दिया था, तो डेट ऑफ इन्वॉइस क्या था आपका, वो कंप्लीशन ऑफ इवेंट में था, ऑन और बिफोर कंप्लीशन ऑफ इवेंट. सो जब मान के चलिए आपको ये ठीक हुआ है 31 दिसंबर को, सो दैट विल बी द डे ऑफ इन्वॉइस, टाइम लिमिट ऑफ इशूइंग इन्वॉइस. सो दैट विल बी योर डे ऑफ इन्वॉइस इटसेल्फ, यही टाइम लिमिट होता है. एंड देन इन्वॉइस कब इशू हुआ, या तो इसी दिन पे इशू हो सकता है, या तो आपको पहले भी इशू कर सकता है वो इन्वॉइस. तो जिस दिन इन्वॉइस इशू होता है within time limit, उसी दिन that will be considered as the time of supply of those services provided by physiotherapist to you. But if advance is more than 1000, then such second option shall not be applicable, and normal time of supply provision shall be applicable. So now you have a question कि अगर advance payment की बात आ रही है, तो फिर हमने यहाँ पे देखा है देयर इज़ वन केस, इफ़ यू आर इन सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर FCM, देन ऐसे सप्लायर को तो पेमेंट डेट तो है ही नहीं. तो टेक्निकली अगर आपके एग्जाम्स में ऐसा है कि यू हैव टेकन एडवांस अगेंस्ट सप्लाई ऑफ गुड्स, देन आपको तो इट ऑटोमेटिकली बाईपासेस द रूल, बट स्टिल दिस नॉर्मल रूल अप्लाइज. ऐसा नहीं है कि दे हैव कम्प्लीटली रिमूव्ड इट, बट लॉजिकली दिस वॉन्ट अप्लाई द सेम थिंग. So that is how sometime it happens. It's human stuff, it is not as perfect. So यहीं पे it is a loophole you can say, or something like that, कि अगर आपने ज़्यादा पेमेंट दिया भी गुड्स के सप्लायर को, आप मान के चलिए कि
मैं बहुत बड़ा इंसान बन जाता हूँ एंड देन मैंने पार्डन मी, मैं बहुत बड़ा प्रोफेसर बन जाता हूँ सीए का इन फ्यूचर, सीए करने के बाद में। एंड देन आप मैं आई डू सम काइंड ऑफ बैच और सम काइंड ऑफ जीएसटी बैच ऐसे मैं निकालता हूँ एंड देन आई डू प्री बुकिंग ऑफ बुक्स ओनली, प्री बुकिंग बुक्स, क्योंकि आप भी, अब मानिए आप भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुके रहते हो, बस जीएसटी चेंजेस के आपको मान के चलिए मेरे बुक्स पसंद आते हैं तो आपको बुक्स चाहिए, तो आपको प्री बुकिंग अभी मेरा आया नहीं होगा, फिर आपको चाहिए कि नहीं मैं प्री बुकिंग में से ही गौरव मैं आपको देने को रेडी हूँ। तो ऐसे कंडीशंस में मुझे ये देखने की भी ज़रूरत नहीं, हालांकि इसमें भी देखूँ तो कुछ गलत नहीं होगा। इफ़ आई फॉलो दिस रूल ऑल्सो आई विल गेट द सेम आंसर। इफ़ I ignore this rule and directly follow normal time of supply provision, that will be also not an issue. And the good part is कि अगर आपने मुझे 1000 रुपये से ज़्यादा भी दिया फिर भी डेट ऑफ पेमेंट मेरे लिए अप्लाई ही नहीं होगा। बट if मैं बुक्स के साथ में लेक्चर्स भी बेचूँ आपको, तो फिर ये सर्विसेज में आ जाएगा और ये बंडल होके भी आ जाएगा। तो अगर बंडल हुआ तो फिर सर्विसेज का अप्लाई होगा एंड देन डे ऑफ पेमेंट शैल बी एप्लीकेबल। तो फिर हमारी बात सेम यहीं पे आ जाएगी कि इससे मैं अपने प्री बुकिंग में 1000 रुपये से ज़्यादा दिया, दैट विल बी कंसिडर्ड एज डेट ऑफ सप्लाई और टाइम ऑफ सप्लाई फॉर मी, एंड मुझे एडवांस में ही गवर्नमेंट को पेमेंट करना पड़ेगा। So that is very deep summary that I gave. कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा आती है जैसे interest late fee same as supply of goods which is date of receipt, and the second proviso of rule 47 this is not much important कि अगर आप इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी या फिर ऐसे टेलीकॉम कंपनी और नोटिफाइड सप्लायर ऑफ सर्विसेज, मोस्टली फिनेंस कंपनी एंड टेलीकॉम कंपनी who makes taxable supply of services between deemed distinct person or distinct person itself, then time of supply will be earlier of time of recording such supply in books of account or before expiry of a quarter during which such supply is made. It is an easy and iterative stuff, ये आप कुछ याद कर सकते हो। या फिर time of supply of spectrum, so the time of supply will be earlier of due date of installment or payment. Installment क्या होता है कि I'm not talking about spectrum installment, but आप मान के चलिए कि जैसे ये जियो ने जो गवर्नमेंट के सैटेलाइट्स होते हैं उसका स्पेक्ट्रम ले रखा है, तो दिस इज़ अ कंटिन्यूस सप्लाई। तो डिपेंड करता है वो इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं या फिर प्री पे करते कि पे करके करिए या फिर उसके करिए। तो दोनों का ऐसा मॉड्यूल में आप देखने जाए तो दोनों का अलग अलग लिखा है, बट जनरली इज द सेम कि जब ड्यू डेट हो या फिर डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट विच एवर इज अर्लियर दैट इज कंप्लीटेड एट टाइम ऑफ सप्लाई। सो इसमें आप ज़्यादा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत भी नहीं है आपको, बट इट्स नॉट दैट टफ एज वेल कि जब आपका ड्यू डेट हो, रिगार्डलेस ऑफ योर मोड ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द गवर्नमेंट, whenever the due date is there or whenever you make actual payment whichever is earlier, that will be considered as a time of supply. Secondly here this is also not much important but still आप learn कर सकते हो, sometimes it might come in MCQs. time of supply of services of road construction and maintenance, जो रास्ता आप बनवाते हैं, आप मान के चलिए कि आपको जेएम रोड का ठेका मिल गया। इफ़ यू डोंट नो अबाउट जेएम रोड वाज बिल्ट अ वेरी लॉन्ग अगो, इट्स स्टिल वन ऑफ पिनेकल ऑफ हाईवेज इन एंटायर इंडिया। ये पुणे में है एंड द रोड इज़ लवली। तो आप मान के चलिए वो रोड का कुछ तो आपको मेंटेनेंस या फिर फुटपाथ का मेंटेनेंस का वो मिला, अब मान के चलिए इट ऑल्सो कम्स अंडर नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स ऑफ NHA। हालांकि वो नेशनल हाईवे में नहीं आएगा, अब बस मान के चलिए, आई एम नॉट श्योर, शायद वो नहीं आता है, बट आप मान के चलिए वो नेशनल हाईवे में आता है एंड आपने उनसे ठेका ले रखा है, ठेकेदारी या फिर कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है अंडर हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। क्योंकि जो फुटपाथ आप मान के चलिए वो 10 किलोमीटर का स्ट्रेच है, जो ये फुल जो एक जेएम रोड करके जाता है उसके ऑपोजिट ऐसे FC करके जाता है, फिर ऐसे शिवाजी रोड ऐसे वो
शनिवार वाडा रोड ऐसे करके आते हैं. सो इट इज़ सम काइंड ऑफ लाइक दिस. आपने मान के चलिए फुल एरिया का फुटपाथ बनाने का, फिर ये ग्रीनरी बनाने का. एंड आपने नोटिस करा होगा जीएम रोड पे आई हैव प्लेड, उधर ना ऐसे बेंच है बैठने वाले, वहाँ पे चेस वेस ऐसे उधर ही टेबल पे बने रहते हैं. ऐसे ही कुछ आप कर रहे हो बहुत ब्यूटीफुली. सो शायद आपको ऐसा है कि 10 किलोमीटर स्ट्रेच में ही पूरा इतना अच्छा करना है आपको फुटपाथ एंड ऑल. तो आपको पता ही होगा कि ये एक दिन में तो नहीं हो पाएगा, ये एक महीने में भी नहीं हो पाएगा, ये शायद 1 साल लग जाए. अब आप बहुत अच्छे कॉन्ट्रैक्टर हो तो आप ऐसा तो नहीं सोचोगे कि पेमेंट डायरेक्टली 1 साल में करें. आप तो बोलोगे कि नहीं नहीं प्लीज़ लेट अस डू पेमेंट ऑन एटलीस्ट मंथली कर दीजिए, या फिर क्वार्टरली कर दीजिए, या फिर अगर इट इज़ ऑफ 10-15 ईयर्स तो या फिर ईयरली भी सोच सकते हो कि अगर 10-15 साल का आपको मिल गया पूरा पुणे का तो आप ईयरली भी सोच सकते हो. तो पेमेंट आपको ऐसे इंस्टॉलमेंट में होगा. दिस इज़ नोन एज हाइब्रिड एन्युटी मॉडल. So we should not get into absolute nuances or specific nuances of hybrid annuity model. The technicality stuff is that कि installment में पहले ही प्रीपे होता है, आपको होते जाता है. That is called hybrid annuity model. NHI pays you. तो इसमें भी आप कॉन्ट्रैक्टर हो तो आपको इस पर भी जीएसटी लगेगा. यू माइट बी थिंकिंग कि अरे गवर्नमेंट से ही मुझे पैसे आ रहे हैं, मुझे गवर्नमेंट को ही देना है. तो so it comes under RCM services. That's why even this spectrum comes under RCM services. आप गवर्नमेंट से ही लेते हो एंड दूसरे गवर्नमेंट आई मीन मान के चलिए दिस कम्स अंडर डिफरेंट मिनिस्ट्री एंड दिस जीएसटी कम्स अंडर डिफरेंट मिनिस्ट्री. जीएसटी comes under, and then even this NHI comes under different ministry and you'll pay GST to GST का ministry. So since it's different, आपको अलग से पेमेंट करना पड़ेगा. This also comes under RCM and this also comes under RCM. So in this both cases आप ये वाला देखोगे भी नहीं. प्लीज़ रेफर मत करिए, आप डायरेक्टली यहीं पे आइएगा. It is mostly, can mostly come in MCQs for 1 or 2 marks. अगर आया तो it's a very easy answer. तो फर्स्ट थिंग इज़ आपका इन्वॉइस विल बी इश्यूड विद इन टाइम लिमिट. टाइम लिमिट का क्या है, टाइम लिमिट तो सेम ही होता है. कंटिन्यूस सप्लाई, ड्यू डेट असर्टेनेबल ऑन और बिफोर, ड्यू डेट नॉट असर्टेनेबल ऑन और बिफोर, डेट ऑफ एक्चुअल रिसीट ऑफ पेमेंट, और कंटिन्यूस. ये इवेंट वाला तो नहीं आएगा क्योंकि इट इज़ हाइब्रिड एन्युएशन सर्विसेज, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल. तो कौन सा इवेंट ये आएगा ही नहीं. या तो ये होगा या तो ये होगा. मोस्ट प्रोबेबली यही होगा क्योंकि आई मीन ड्यू डेट तो असर्टेनेबल ही रहता है इन बोथ स्पेक्ट्रम एंड वो केसेस. ऑफ कोर्स गवर्नमेंट विल स्पेसिफाई और ड्यू डेट की कब आपको पेमेंट करना है. तो दिस केस इफ द इनवॉइस इज इश्यूड, आप मैं वापस से रिपीट करता हूँ, आप कॉन्ट्रैक्टर हो NHI का, अपने पुणे का वो जो GM है एंड देन FC एंड देन वो जो शनिवार वाडा का रोड है उसका आपने फुटपाथ बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिए रखा है. तो सिनेरियो 1 इज इनवॉइस इज इशूड विद इन टाइम लिमिट, देन योर time of supply shall be earlier of date of issue of invoice or date of receipt of payment, whichever is earlier. अगर हम इधर देखने जाए तो ऐसे 61st वगैरह वगैरह था. तो it's similar to this ऐसा date of issue of invoice FCM जैसा treat होगा. date of issue of invoice and then date of receipt of payment. ये जनरली जो वो यूज़ होता है वो होता है. अगर invoice is not issued within time limit, then that shall be earlier of due date as per contract or date of receipt of payment. This is special one, due date as per contract, क्योंकि sometimes पैसा may not come तो गवर्नमेंट इज़ लाइक कि देना पड़ेगा आपको क्योंकि जनरली इट वाज ओवर हियर डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज एंड आप कॉन्ट्रैक्टर हो तो आपको पता ही है कि इट विल टेक अराउंड 1 whole year. तो एंड देन माइट बी इट कैन टेक अराउंड 15 years. तो 15 साल तक तो रोक के नहीं रख सकते पैसा. तो इसीलिए it is converted as, I mean, GST department is actually smart from this case. I really hope other ministry will get as smarter as direct taxes and indirect taxes ministry, because you can see from the provisions how smart person they are. They are absolute monster. I mean, monster is a wrong word. Absolute voracious user of
हेडन्स रूल, ये मैं बाहर की चीज़ें बता रहा हूँ, हेडन्स रूल। सो हमारा ये कंप्लीट हो गया है समरी। सो हेडन्स रूल में क्या होता है कि यू डू सम काइंड, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज मिसचीफ रूल। ये you will learn in interpretation of statutes. So mischief rule में क्या होता है, there is some kind of mischief or there is some kind of mischief, or मैं घूम फिर के mischief बोल रहा हूँ, there is some kind of mischief is done or some kind of loophole is used. So if these both are used, then the law is changed accordingly. एंड देन हम ऐसे लॉ को ऐसे पढ़ते हैं कि, एंड ऐसे बनाते भी ऐसे हैं, पढ़ते भी ऐसे है कि व्हाट वाज द मिसचीफ, हाउ डिड लॉ टेंड टू चेंज द मिसचीफ, और हाउ इट डिड टू सप्रेस दिस मिसचीफ, एंड हाउ इट इंटेंड्स टू एक्सपांड इट। ऐसे 3-4 टर्म्स हैं, 3-4 पॉइंट है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये मैंने बनाया था। ओके। So as you can see, I'm GST, I'm student of Amit Mahajan. So आपको जो भी वो मिलेंगे, क्या बोलते हैं, जो भी आपको नोट्स मिलेंगे, दैट विल बी रिलेटेड टू हिम इटसेल्फ, उनसे थोड़ा सिमिलरिटी मिलेगा। सो क्रेडिट इज ड्यू टू हिमसेल्फ। सो दिस वाज द थिंग इन हेडन्स रूल और मिसचीफ रूल, दैट व्हाट वाज द लॉ, what was the law before making the act, what was the defect or mischief or hardship caused by that earlier law। अब समझ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल सत्यम केस में, इफ़ यू नो सत्यम केस, सो ऑडिटर्स हैड मिसयूज्ड, इफ आई एम करेक्ट, ऑडिटर्स हैड मिसयूज, तो क्योंकि तब रोटेशन का ऐसा ऑडिटर्स के रोटेशन का प्रोविजन नहीं था, सो दे हैड मिसयूज्ड दैट। सो दे विल अंडरस्टैंड व्हाट वाज द लॉ बिफोर मेकिंग द एक्ट। सो देयर वाज जस्ट एन ऑडिटर्स प्रोविजन कि ऑडिटर चाहिए। व्हाट वाज द डिफेक्ट और मिसचीफ और हार्डशिप कॉज्ड बाय दैट अर्लियर लॉ, के लोग हैं खरीदे जा सकते हैं। सो दैट वाज द मिसचीफ के both of them colluded each other। how does the parliament seek to resolve it? तो उन्होंने नया कंपनीज एक्ट ले आए, एंड व्हाट वाज द ट्रू रीजन फॉर रेमेडी, उन्होंने डायरेक्टली रोटेशन डाल दिया, रोटेशन डाला है, प्लस कूलिंग पीरियड डाला है। अगर आपने पढ़ा होगा, रोटेशन 5-10 ईयर ऐसे करके हैं, बट देर इज रोटेशन अगर पेड अप से कैपिटल एक्सीड्स द थ्रेशोल्ड लिमिट। एंड आई हैव अ वेरी कॉमेडी केस लॉ हियर एज वेल। इट्स स्मिथ वर्सेस ह्यूजेस अंडर स्ट्रीट ऑफेंसेस लॉ 1989। इट्स नॉट इन इंडिया, इट इज रादर इन डिफरेंट कंट्री। It was made illegal for prostitute to solicit in a street, कि वो आप रास्ते में जाके आप लड़के पकड़ के नहीं ले जा सकते। It was a time wherein men were harassed instead of women, and so the defendant argued that she was innocent since she solicited men from the balcony। So whenever a woman was, or a prostitute woman was booked in the court, एंड सी प्लीडेड दैट कि आपका लॉ ऐसा कहता है कि आई कैन नॉट सॉलिसिट मैन ऑन अ स्ट्रीट, मैं उनको रास्ते पे जाके नहीं छेड़ सकती हूँ, बट मैंने तो उन्हें बालकनी में जाके छेड़ा है। सो कोर्ट फाउंड हर गिल्टी, रूलिंग दैट अंडरलाइंग पर्पस ऑफ द मिसचीफ वाज टू प्रिवेंट पासर बाई फ्रॉम बीइंग हैरास्ड regardless of whether she was physically standing on the pavement or not। कि आपको रोड में रहने की ज़रूरत नहीं है। this main stuff was कि you are not allowed to solicit or you are not allowed to harass men। so that is a part। regardless of it, I hope आपको ये उतना ही कॉमेडी लगा हो जितना मुझे लगा। तो if you have free time, आपको ऐसे बहुत सारे केस लॉज पढ़ने चाहिए। ऐसे फैमिली के केस लॉज होते हैं, फैमिली ड्रामा के अभी आते हैं, अभी आई थिंक आपको रील्स में मिल जाएंगे, वेर इन यू विल गेट दिस, क्या बोलते हैं उसे, जो डाइवोर्स के बाद में लड़कियों को मिलता है, एलिमनी। यस, alimony के cases होते हैं, wherein I am hearing some cases wherein husband will have to pay alimony even if wife
और DNA says कि ये जो बच्चा है और child है, it is not of husband and wife, or rather husband and other mister, so still the husband has to pay alimony. So I think, yeah, it's not to have my opinion, but I rather find it amusing. So yes, that was the summary of time of supply. I hope you like this video. If I miss something, or if you want to give me some statements, some more examples, or some more suggestion, do give me them. I'm open to them, and I hope to see you in the next video. Do give a like, do subscribe my video, and do comment, and let's pray that जितने भी लोग मुझे सब्सक्राइब करते हैं, जितने भी लोग मुझे सब्सक्राइब करेंगे, एंड देन जितने भी लोग मुझे लाइक करेंगे, वो सब आने वाले अटेम्प्ट में पास हो जाएंगे. लेट्स होप दैट. एंड अगर जो कमेंट करा तो you'll get all India rank. So let's hope so. With this shit, you can see the time right now. It's Tuesday, 4th August, and it's 2:46 a.m. Even I'm